ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त जो कि जब स्कूल में हुआ करते होते थे तो वो एक बड़े ही मिस्टीरियस और बड़े एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। हम याद इस तरह करते हैं कि जो हमारा क्लोजेस्ट पॉसिबल फ्रेंड्स ग्रुप है वो हमेशा याद करता है यार, असास के बाहर एक फड्डा हुआ था जिसमें वो एक लड़का हमारी साइड से था और दूसरी साइड से 40 लड़के थे और उसने तोड़ के रखा हुआ था उनको। एंड फ्रॉम दैट बॉयज जिसमें जाके फड्डे में 40 लोगों को पकड़ के रखा हुआ था टू अ प्रोफेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर Uloomi Kareem. Uloomi Kareem Shaheen. Yeah. Sir, how are you? I'm good, brother. Alhamdulillah. And how about yourself? Allah ka shukr, zabardast. It's been a really long time. Yes, it has. Really long time. Uloomi बुलाने का मकसद जो ख़ास ये था कि मैं पिछले दिनों देख रहा था, there was a fight जो कि सोशल मीडिया बड़ी वायरल हुई थी जी। 56-58 सेकंड्स के अंदर जो है एक पाकिस्तानी भाई ने एक इंडियन भाई को एक मुक्का मारा और वो फारिग हो गए और it was a huge India versus Pakistan thing. And I was watching that and I saw के and साथ मेरी बेगम बैठी हुई थी and लैपटॉप के मैं देख रहा था तो she was like, why, what is this, what is going on? Why are the people trying to kill each other? Yeah. And why would someone like voluntarily do this? And I was like, यार बात तो दुरुस्त है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो let's talk to an expert कि mixed martial arts क्या होता है, क्यों होता है। And for that, starting with, आप मुझे बताएं कि आपका ये इंटरेस्ट कैसे बना? मुझे I don't remember how I started this basically क्योंकि बचपन से I was into martial arts, traditional martial arts और उसके बाद फिर मुझे नहीं याद कि मतलब how I transitioned into different martial arts and I started practicing different martial arts and ultimately 2007 में when both my brothers they were like अच्छा ऐसा कोई martial art बनाते हैं, हमें पता नहीं था कि मिक्स मार्शल आर्ट कोई चीज़ होती, तो उन्होंने कहा ऐसे कोई मार्शल आर्ट बनाते हैं कि जिसमें सिर्फ खड़े रह के मुक्के मारना है, खड़े रह के लाते मारना ना हो, उसमें सब कुछ हो। It should be a complete fighting system. Yeah, and just to sort of मैं यहाँ पे वो करूँगा कि आपने कहा जब मार्शल आर्ट्स की बात की तो एक तो वो होता था ना, वो बचपन में बस वो ड्रामे का होता था, कराटे, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, सो वो वाली चीज़ जो होती थी कि that's where you basically started getting into this entire thing. Yeah, I started off in I think 96 or 97 from wushu. It's a Chinese kickboxing art. ठीक है। फिर वहाँ से when I came to Islamabad, I started practicing taekwondo. Right. And again, same thing, limits like restricted. उसमें जो है ना techniques थी. You can only kick, right. but very limited punches. You can only just like punch the body once. वो भी एक किसी fight में, लेकिन so you were not allowed to punch to the face. Right. फिर हम देखते थे कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं तो यार लोग मुंह पे मुक्के मार रहे हैं, लाते हैं कोई नहीं मारता। We'd be surprised कि यार हम सीखते हैं लाते मारना, इधर फटे होते हैं मुंह पे मुक्के मारे, what's going on? Yeah. So I was like really curious about these things. फिर again like I said, अच्छा बड़ा प्रैक्टिकल टेंस दिया ना आपने, टच दिया कि फाइट्स जो हो रही हैं यार, हम तो इंटरेस्टिंग। तो उसमें फिर और जो like one of the hardest जिसको समझा जाता है मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड, क्योकुशन, उसमें यह था कि उसमें आप मुंह पे किक मार सकते हैं, नी मार सकते हैं, you can knee someone in the face but you can't punch someone in the face. अच्छा। I was thinking मतलब टांग like it's such a huge muscle, it's such a the shin bone is so strong, वो मुंह पे लगती है, वो अलाउ है आपको, लेकिन ये जो 4-5 नकल्स हैं ये मुंह पे मारना अलाउ नहीं है. Why is that so? Right. Both my coaches, they were like, you leave the thinking part to us, let us do whatever the thinking part is, और तुम सिर्फ train करो. So they started training me in different martial arts. In 2008-ish. This was 2007-ish. अच्छा. So I started training a little bit in boxing, a little bit in wrestling. थोड़ी बहुत जो आती थी, they traveled to different cities in the country और जहाँ से जो कुछ सीख सकते थे, they learned from there and then they came back and वो खुद भी पढ़ रहे थे. My older brother was in Zabest, the other brother was in Qaeda University, and they were studying at that time and they traveled. They skipped classes, they traveled. थोड़ा बहुत जो जहाँ से जितना सीख सकते थे सीख के आए, सिखाना शुरू हो गए. 2008 में when you might have heard the name Bashir Ahmed. Yeah, he's absolutely. a big name in Pakistani mixed martial arts community because he's basically the one who sort of made mixed martial arts known to the Pakistani community. Right. और जो थोड़े बहुत जो भी ट्रेनिंग चल रही थी, कोई कुछ भी ट्रेनिंग कर रहा हो, बशीर अहमद वाज द गाय जिसने बताया कि यार देखो इस तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स भी कोई चीज़ होती है पाकिस्तान को. राइट. तो वी वर डूइंग क्रॉस ट्रेनिंग एंड बशीर के में जिस टाइम बशीर आया था उससे कोई महीना 2 महीने पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
a friend of my brother's, they gave him a DVD saying that, there's the thing that you guys want to do, there's already a sport. It's called mixed martial arts. और ये अमेरिका में ऐसे practice हो रही है. Or DVDs lie and we were watching fights and my brother was like, this is exactly what UFC I wanted to type do. fights. Exactly, UFC ही की DVDs थी. अच्छा. तो उन्होंने कहा ये जो है ना यही हमने करना था. खैर करते कराते YouTube से आगे पीछे से इधर उधर से सीखते गए और जो है ना just the journey just continued. We didn't stop, didn't look back. And so you became a professional fighter straight out of high school? Yeah, क्या scene है? Yeah, did you go here and there? Because I remember you went to Bahria for a degree. Yeah. So what did you do? So when I was when we were in high school, that's when I started fighting amateur. Right. Had a couple of amateur fights, and then I think 2012. Yes, that's when I was in Bahria. I was doing my undergrad in computer sciences. तो वहाँ पे I started fighting professionally क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे पहली professional league शुरू हुई थी Pac Fight Club. That I was like, I have to jump on this card. I have to be on this card and on this event. So everyone wanted to be in that event. Fighters were handpicked, and only the ones जिनका अच्छा experience था, amateur में अच्छा record था, they had a good fighting style, they were presentable, they were put on that card, and I was one of those guys. और वो किसने करवाया था? This was I think some name that rings in my head. It's like Zainul Abidin or something. नहीं, but like what ये लोग इन लोगों का experience like background? No, nothing. So the guy was a Canadian Pakistani who came to Pakistan, and he saw that Bashir is like putting in the effort. वो amateur events करा रहा है अपने gym में. They're called smokers. जहाँ पे amateur fights होते हैं जिसको लोग काफ़ी लोग underground fights भी बोलते हैं. Right. So he saw that Bashir is hosting, he's hosted a lot of those events. तो उसने कहा यार why not make a professional league out of it. Exactly. ये जो underground fights हो रही थी, amateur fights, was there any economy attached to it? This was just purely for passion. None. Even the professional fights, the first 2-3 events, there was no one was paid. Things pick up slowly. Pakistan में अभी भी ये है कि fighters get paid very less. जितना बाकी दुनिया में fighters को pay किया जाता है. वहाँ तो it's a huge industry, right? Exactly. आप मुंह तोड़वा रहे हो ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी में संवर जाएगी तो that's fine, right? Exactly. तो खैर अभी भी I remember being in 2014 I was the highest paid fighter of Pakistan for a fight, and I was paid 7,500 rupees. So that was my fight purse, yeah. And but I don't mind जो हमारा fight purse था जो भी था, but at that point the point is that we did not give up. We kept going strong. We did not listen to anyone. हमारे parents ने बोला यार बेटा छोड़ दो ये, कहाँ तुम जो है ना किन कामों में पड़ गए हो. अच्छा, parents का तो I want to get into that, like how I mean, this is not a family sport, right? Like, this is not something जो कि खानदान से जदी बच्चे चला रहे हैं. They say कि it is a family sport. पूरी family देख सकती है लेकिन अलग-अलग बैठ के. But like ये आपके भाइयों ने, so this you guys are the first ones. खानदान में तो किसी ने कभी नहीं किया था ना पहले. नहीं, दूर तक. My family is known. हमारा गांव जो है शिमशाल, वहाँ पे it's upper Hunza. मेरे जो ताया अबू हैं, जो मेरे वालिद साहब के सबसे बड़े भाई हैं, he is the first educated person of that village. उन्होंने तालीम कंप्लीट करने के बाद उनको he had a chance to get in the Air Force as a commissioned officer. तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं करना, मैंने गाँव जाके स्कूल जो है ना बनाना है. So he started the first ever government school. तो हमारी फैमिली को लोग जो है तालीम से जानते हैं. तो 2016 में I remember when I fought an international fight and I came back, पूरा गांव आया रिसीव करने के लिए, और मेरे ताया जो है ना खड़े होकर पूरे गांव के सामने कहते हैं कि आज तक हमारे ख़ानदान में जो है हमारे ख़ानदान को लोग तालीम से जानते थे, अब हमें लड़ाइयों से भी जानना शुरू हो गए हैं. So I am the first one in the family who's like fought professionally. Right. Both my brothers, they have had their amateur fights. Right. That was way before like I stepped into this. I was still training. पाकिस्तान का सबसे पहला जो amateur event हुआ था उसमें दोनों मेरे जो है ना भाई लड़े थे. Right. But yeah, अभी भी family में I am the only one who's professionally on this side. Yeah. Right. And अभी when was the last time you had a fight, professional fight? October 2018 when I fought professional mixed martial arts. Achha, so but last year I fought in Thailand. I fought Thai kickboxing, aka Muay Thai fight, and that was for a title belt which I won.
अच्छा, so what's the difference between MMA and बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट्स इज़ अ स्पोर्ट जहाँ पे आप खड़े रह के आम ज़बान में आप खड़े रह के लड़ सकते हैं. आपने किसी को गिरा दिया तो वहाँ पे भी आप लड़ सकते हैं. It's unlike any other combat sport where when you punch someone they fall down and you stop and you wait for the person to get up and the referee gives you a count. Right. That doesn't happen. आपको मौका लगा, आप गिर गए, आपका जो ओपोनेंट है he is going to make sure कि आप गिर गए हो, I'm going to finish this guy. So they're going to jump on top of you. They can put you in a submission hold. It could be any sort of joint lock, or it could be a choke. Or then they can keep on striking punches, elbows or knees, and until the referee stops the fight. right? तो Muay Thai में जो है it's just like stand up fight. You stand on your feet, you fall down, like I said, you fall down, the referee is going to stop the fight, it's going to give you a 10 count. So it's just like boxing, but Thai kickboxing mein you can punch, kick, knee and elbow. Right. So there's 4 tools. You use all your 8 limbs to fight. Mixed martial arts में फिर ये है कि आपका grappling आ जाती है. There's a lot of like you say clinch fight. When you're fighting, गुत्थम गुत्था हो गए आपस में, 2 बंदे गले लगे, you can still fight there. Right. He puts you on the ground, you can still fight off of your back, or you put someone down and put them on their back, and then you can still fight from there. Right. Yeah, it's a. और अगर मैं आपसे MMA का मैं थोड़ा सा वाइडर करना चाह रहा हूँ कॉन्वर्जेशन को, मिक्स मार्शल आर्ट्स के पीछे फलसफा एसेंशियली है क्या? I mean, अगर मैं फॉर अ सिंपल पर्सन अगर मैं देखूँ ना कि वो कहा जाता है कि आप इट्स अ नो बार्स फाइट, जिसमें आप इफेक्टिवली जिसे कह के यार जिसने जो करना है करे और जाकर वो करे. बट अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम श्योर यू प्रोबब्ली सीन हाउ इट इवॉल्व्ड एंड वो सारा फलसफा था क्या, किस तरह से ये दिस केम टू बी? एक जो बहुत ही ट्रेडिशनल बात चलती आ रही थी कि हमारा स्पोर्ट सबसे बेस्ट है, हमारा मार्शल आर्ट बेस्ट है, आज तक भी ये चलता है कि हमारा कुंग-फू बेस्ट है, ताइक्वांडो बेस्ट है, क्योकुशिन बॉक्सिंग बेस्ट है, रेसलिंग बेस्ट है. तो इसी बात को सॉल्व करने के लिए आई थिंक इट वाज 1991 व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स में जो है देयर वाज दिस ह्यूज टूर्नामेंट कॉल्ड द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जिसको आज भी UFC के नाम से जाना जाता है. तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई दुनिया भर से जिस स्टाइल के बंदे ने, जिस मर्जी बंदे ने आना है, आएंगे, कम्पीट करेंगे, लड़ेंगे. राइट. सो वहाँ पे different style के लोग आए, people from backgrounds in boxing, kickboxing, wrestling, judo, aikido, the martial arts where you could even hold a finger and break it, the self-defense tricks in that. So all of those guys, they fought with each other, all of those guys they competed against each other, and then वहाँ पे ये idea आया, वहाँ से ये बात basically बनी कि कोई एक sport या कोई एक martial art best नहीं होता, एथलीट अच्छा होता है. राइट. तो वहाँ से फिर क्रॉस ट्रेनिंग का जो है ना एक कॉन्सेप्ट आया. बट उस एक इवेंट में वन ऑफ द गाय हु डोमिनेटेड एवरीवन वाज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट गाइज. ही वाज फ्रॉम ब्राजील. अच्छा. एंड that guy was practicing the art of Brazilian Jiu-Jitsu. So he would just take everyone to the ground. He would put them in a submission hold, either break an arm, break a leg, or put them in a choke hold, put them to sleep, or make them tap out. So करते करते that was the guy whose name was Royce Gracie. Right. So उस बंदे ने ब्राज़ीलियन जिजित्सु यूज़ करके जितने भी मतलब जो उसका कंपटीशन था, ही लाइक एस्ड इट, ही वॉन, ही केम ऑन टॉप. एंड वहाँ पे पता चला कि ब्राज़ीलियन जिजित्सु का जो फाइटर था, इवन दो ही वाज द स्मॉलेस्ट गाय इन द कंपटीशन, बट ही स्टिल वॉन. राइट. तो वहाँ स्टीरियोटाइप है कि यार कोई बिग बल्की लाइक दिस एंड दैट, वो चीज़ सारी ब्रेक. एग्जैक्टली कि यार वो बंदा बहुत स्केरी है, ही हैज़ बिग मसल, सो ही इज़ गोइंग टू डू दिस. ऑल ऑफ दैट वो नल एंड वॉइड हो गया. तो फिर वहाँ पे भी जो है ना बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब क्रॉस ट्रेन करते गए, एवरीवन वाज ट्रेनिंग डिफरेंट मार्शल आर्ट्स, तो वहाँ से फिर ये पता चला कि यार इफ अ गाय वांट्स टू टेक यू टू द मैट एंड और टू द फ्लोर एंड फिनिश यू देयर, यू कैन डू समथिंग एल्स अबाउट इट. तो क्रॉस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल आया. वहाँ से फिर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नाम से जो है ना प्रीटी ऑब्वियस है कि इट्स अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स. राइट. तो वहाँ से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ें शुरू हुई. पीपल स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द आर्ट ऑफ ब्राज़ीलियन जिजित्सु, जो कि ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जापानीज़ आर्ट था जिजित्सु, उसका एक ब्राज़ीलियन वर्जन बनाया, दैट इज़ ये जो ग्रेसी फैमिली थी, इसीलिए उसका नाम ब्राज़ीलियन जिजित्सु पड़ गया. और फिर वहाँ से इसकी अभी डिफरेंट वेरिएशंस निकलना शुरू हो गई है. सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, क्योंकि जब आप ज़मीन पे गिरते हैं तो या तो आप मतलब किसी लड़ाई में भी अगर देख लें, कोई बंदा ज़मीन पे गिर गया, कहते हैं यार उसको लिटा के बड़ा मारा बेचारे को. हाँ. बंदा लेटा हुआ है, एंड देन दैट मीन्स इट हिज गेम इज़ ओवर.
but that's not the case here. Right. Even if you fall down, your game is not over. क्या पता हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से लेट गए हो. You're good there. You're good on the ground. Essentially, it's like strategy game है ना. Yes, exactly. It's Brazilian jiu-jitsu को इसीलिए human chess भी बोला जाता है. Right. Because it's you set things up. It's like you set a trap. It's exactly like you're playing chess. You set a trap, and then at the end you have someone's neck in your hand or you have someone's arm, and you just look at them and be like, you got a tap. Makes a lot of sense. So recently, Amir Khan with boxing, he's come to Pakistan and he's trying to sort of revive that industry and make the entire thing out of it. And उनकी कहानी पढ़ते हैं और boxers के, a lot of boxers, when you read their stories, तो ये होता है कि यार बचपन में they were very troubled, and then it's a very good sort of an outlet for a lot of people जो कि anger management issues होते हैं, जिनको इस तरह के होते हैं, तो to route them towards something a bit more professional, a bit more controlled. So मैं अगर probably वो एक तो ये कि parallel अगर draw करूँ, पहले तो ये मुझे बताएं कि were you a troubled person in your childhood? Is there a correlation to being aggressive, या ये चीज़ natively आई थी, या ये चीज़ ऐसी थी कि okay you got into taekwondo and sort of built yourself towards where you are today? I did get bullied a lot बचपन में. अच्छा, you got bullied a lot? Yeah. Because I was very sharif, if you I have these pictures of my childhood on social media as well, where I have ये जो कॉलर वाला बटन है सख्त जो ना बिल्कुल टाइट करके बांधा हुआ है, मेरी पैंट छाती तक है और गोल चश्मे पहने हुए, हैरी पॉटर इंस्पायर्ड. एंड बहुत मतलब मेरे अपने दोस्त जो होते तो बहुत मजाक उड़ाते थे, कोई आते जाते चपेट मार गया हो यार, चल यार, बैटरी बोलते हुए चपेट मार के चले जाते थे. सो आई हैड दैट. I had never thought कि जो है ना I could become a fighter or something of this sort. I still remember getting hit by cricket के जो shin pads होते हैं. हमारे जो religious education center था वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे who were like the CRs, तो वो जो है ना अपनी नौस जमाने के लिए बाकियों को पढ़ा के वो जो ना pads मेरे सर पे मारते थे. And I was the least violent guy. मैं बहुत हद का शरीफ था. Really? और कोई 4-5 दिन पहले जो है ना I was playing PUBG with a friend of mine, and he's like, यार तुझे याद है हम कितना तुझे बुली करते थे कि जो है ना we wanted to make you a शरारती guy like us, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं जो है ना हमारी तरफ convert हुए. And he's like, now if I think about that I get really scared. And lekin yes, there was a lot of anger inside me. I was the guy who did not know how to fight, and out of all the people, when someone says Uloomi jo hai na, Uloomi is a fighter, सब कहते हैं यार तुम कैसे fighter बन गए? Out of all the people, तुम कैसे fighter बन गए? So I think even though you were peaceful, but not by choice. Was that the case? I mean, what I mean by that is कि obviously अगर कोई आपको आके मार रहे, पेन इन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप चाहोगे कि यार how can I make it stop? Yeah. But you just did not have the tool at the time to make it stop. I think there was only one fight that I had in my childhood. It was a friend of mine. He was a relative as well. तो बाकी सबको दिखाने के लिए स्कूल के जो ना वो स्कूल की एक बैक साइड थी, वहाँ पे कहते हैं कि जो ना लड़के लड़कियाँ सब गुजर रहे थे, उसे दिखाने के लिए आई थिंक वो क्लास फेलोज जो थे सबको दिखाने के लिए कहता है कि आओ पीछे लड़ाई करते हैं. I still remember it crystal clear. I was like, okay. मैं हाथ जो ना वैसे shoulders आगे की तरफ slouch करते हुए मैं गया, and he started swinging at me, और I ducked और मुझे नहीं पता मैं बस सर बचा रहा था. I made a fist and I hit him with my fingers. I didn't even know how to throw a punch or a slap. मैंने हाथ घुमाया and it hit him on the head. अच्छा. And he just held his head and he sat down, started crying. I still remember the pain. जो मेरी ये right हाथ की जो ring finger थी ये मेरी सूज गई, and I was like, wait, did I just punch my friend? And I started crying as well. I'm so sorry. I didn't mean that. फिर जाके गले लगाया कहता दूर हो जाओ मेरे से. So उस time I felt really bad. I was like, man, how could I do this to someone? I was because my parents had always taught me that no violence policy. But when I got back home and then I told my mother about that, she's like, you did the right thing. If someone raises their hand on you, you do not hold back. So I think that was the turning point for me कि यार मेरी mother ने अगर मुझे इजाज़त दी है, तो I shouldn't hold back if someone is trying to someone's trying to touch me. Yeah, defense में आप basically you have to go all out and you defend yourself. Oh yes, definitely. खैर उसके बाद फिर आहिस्ता when especially when I came here, I remember when I was in my O levels, there was this Afghani kid जिसको सारे चिंकी बोलते थे. He had like small eyes, and I was like, dude, stop calling him Chinky. And he heard the word Chinky from my mouth.
and you मेरी तरफ मुड़ा, ओए क्या बोलते हो, बोला तेज आया, and he kicked me like down there straight up, right? and thank God he missed, and I was like, wait, what just happened? And I'm looking around, it's very confused. Everyone's like, oh my God, he's so strong, and that was that. फिर when I went home and I processed everything, yeah, what happened, what exactly happened, फिर मुझे मैंने अपने भाई को बताया, उसने कौन है मुझे बताओ. I was like, no, like I'm surprised that what happened to me. That is when he's like, you need to start practicing martial arts all over again. Because when I came here, I already had like a background in wushu, or I never used it as violence. It was just an activity for me. क्योंकि मैं हर sport खेलता था. मुझे I had so much energy. I would like go play football and play cricket. उसके बाद जाता हूँ academy में wushu की training करता हूँ, वापस आता हूँ, I was still hyper and energetic. तो my brother was like, this is the time for you to start training taekwondo. वहाँ से फिर taekwondo जब शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता, obviously when I grew up and started getting mature, तो फिर चीज़ें समझ आना शुरू हो गई, and I was like, okay, this is a very important thing in my life. And apart from anything else, martial arts gave me a lot of discipline. मतलब the importance of a human life, the importance of like a human being in general. ये चीज़ें समझना शायद एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपको लाइफ में कोई ना ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, and then that's when you realize like, oh man, life is so precious. Martial art teaches you from the first or the second day. If not, then the first week you're going to learn how important your life is. There certain things happen when your entire life flashes in front of your eyes, and you're like, man, I have to respect my life. I have to, I have to appreciate whatever God has given me, especially my life. Right. तो सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे इस चीज़ ने जो है ना मतलब मार्शल आर्ट्स ने मुझे ये चीज़ सिखाई. उसके बाद then it was all like nirvana for me. Yeah. Anything that would happen, I would start connecting the dots. अच्छा ये ऐसा है, और that made me fall in love with the sport even more. So it's not just like एक particular skill है जो आपने सीखी है, जिससे profound impact on your life as well. Definitely. And then वही आपकी वाली बात कि मैं इसको connect करूँगा कि troubled children के साथ, right? कि how do you sort of give them an understanding of कि what they're worth? क्योंकि a lot of times जो troubled youth होते हैं वो generally वो baggage होता है ना किसी वजह से, तो bully हुए होते हैं, या उनके घर का माहौल ऐसा होता है, या environment ने ऐसा माहौल दिया हुआ होता है. So now the question will probably be a bit wider. Do you think this sort of like, because you guys have an institute as well where you teach this sport as well? Yes. जहाँ वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो क्या होते हैं, like randomly, like मुझे एक दिन एपिफनी आया कि यार मैं जाके सीखना शुरू करता हूँ, या is there a pattern for the sort of people who come in, and do you think that this sport can be used? Because I feel like personally पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें unfortunately हमारे बहुत ज़्यादा nuances हैं, और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा, चाहे वो सोशल हो जाए, हमारे घरों में बड़े मसाइल हैं, हम बहुत तारीफ तो करते हैं कि सोशल सिस्टम बड़ा अच्छा है, बट बच्चे दिल में घुट रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्पेस नहीं है, सारा कुछ है, और उसका आउटलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी. Exactly. So A, do you think this can be used as an outlet? B, the sort of people that come in, is there a pattern to what you see? There's a short answer to A. Yes, this is the answer. I'll supplement it in this way कि आप देखें कि बहुत सबसे जो अच्छे एथलीट्स जो बनते हैं दुनिया भर के, they come from troubled places. किसी भी ओवर प्रिविलेज्ड या किसी भी सिंपल प्रिविलेज बोलते हैं, किसी प्रिविलेज कंट्री से कोई ऐसे एथलीट्स नहीं आते who have the killer mindset, let's suppose, right? उज़्बेकिस्तान के हो गए, रशिया से हो गए, आजकल चचनिया के फाइटर्स जो है ना वो हो गए, कज़ाकिस्तान से हो गए, क्यूबन जो है ना बॉक्सिंग में बहुत तेज़ हैं, मैक्सिकन्स हो गए, फिलिपिनोज हो गए, ब्राज़ीलियंस हो गए. when you hear the name of these countries लगता है कि यार क्यूबा जाना है, फिलीपींस जाना है छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन अगर overwhelmingly developing countries हैं सर. Exactly. तो वहाँ मतलब वहाँ पे जो, और वहाँ से जो भी एथलीट्स बन के जो भी टैलेंट निकल आता है, वर्ल्ड क्लास टैलेंट जो निकल आता है, वो उसी गरीब घराने से होते हैं, एंड उन्होंने उतना ही प्रेशर देखा होता है. हमारे मतलब इसके ज़बान में हम बोलते हैं कि इट्स अ प्रेशर कुकर, राइट? वो इतना पक जाते हैं उस प्रेशर कुकर के अंदर कि देयर इज़ नो वे आउट फॉर देम, राइट? आइदर दे बिकम ड्रग डीलर्स और समथिंग, माफिया, ड्रग्स, ये वो सब चीज़ें पड़ जाते हैं, या तो वो एथलीट बन जाते हैं, और जब वो एथलीट बनते हैं दे बिकम वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, राइट? So again, this brings me back to my point that this gives you discipline, and now when you have the discipline, obviously now you start thinking straight.
right? And especially when you have a lot of problems laying in front of you. My theory is that when you are like surrounded by problems, you'll only see, like when you're inside the problem, you'll only see the problems around you. You will never focus on the solution. Right. This sport teaches, at least it has taught me to, yes, I am in a problem, but there comes a point when I disconnect from myself. I look at my problems or myself from like a third person perspective. और फिर मैं देखता हूँ यार problem solving किस तरह हो सकती है, जो problems है कैसे मैं इनको solve कर सकता हूँ, how can I overcome whatever either I can cry about it all the time or either I can make my exactly my this is the exact thing that popped in my mind. 2011 there's a really dear friend of ours who helped and contributed in our ground game, जो जिसने हमारी एक तरह से foundation रखी, Fazal, shout out to Fazal bhai. He's a British Pakistani who came to Pakistan. He paid the fee. 2010 में हमारा मतलब मिक्स मार्शल किसी को पता भी नहीं था. हम कोई जो भी आता था वो कहते थे, घर वाले कहते तुम क्या लड़ने के लिए पैसे दे रहे हो, तो we were training guys for free and he was the only guy who was a paying client at the gym. And साथ ही साथ जो है वो बंदा हमें भी Brazilian Jiu-Jitsu सिखा रहा था. He was a blue belt at that time and he was teaching us Brazilian Jiu-Jitsu while he was paying the fee. Right. So I was sparring with that guy, जिसको practice fight बोलते हैं. I was sparring with that guy. The guy weighed around like 138 kilos. So I was around 61, 62 kilos. So we were sparring and I remember he kicked me. I did like I flipped around and I fell. I tried to get up. There's a technique called knee on belly. When the person is down, आप घुटना उसके पेट पर रखते हो ताकि उठ ना सके. तो मुझे प्रेस करते हुए दीवार के पास ले गया. अब पीछे दीवार है, सामने 138 किलो का बंदा है, नीचे ज़मीन है, and I have nowhere to go. And he's punching me in the face and he's laughing. So that was the point. Like it just occurred to me. I was just covering my head and I was like, isn't this what life does to you? Yeah. Puts you in the worst possible spot and then it keeps punching you in the face, and then you have two options: either get up and do something about it, Yeah. or you just give up. Yeah. And while I was thinking that, I was like, what can I do from here? फिर उसी दिन उन्होंने हमें एक टेक्निक सिखाई थी which is called shrimping. So like I scooped myself from underneath him. I had towards my head, towards my feet. I was like, okay, I have space towards my head, towards my feet. So I chose to go behind his back, and I pulled a maneuver, and then I ended on top. And he's like, how the hell did you do that? I was like, you taught me that. And then I started punching him. वो अलग बात है, पकड़ के मुझे बाद में फेंक दिया side पे. But then I got out of there, and that was the thing कि मतलब मुझे realize हुआ कि yes, this is it. But that made me fall in love with the sport even more. Every single day, every second. Every single second that passes by, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जब मुझे realize होता है कि यार हाँ, there's a connection in the philosophy of life and mixed martial arts. ज़रूरी नहीं है कि हम if I call myself a fighter doesn't mean I go in there and fight with someone. I mean, being a fighter means to me that I fight every single adversity that comes in front of me. It's just, fighting is my job. Yeah. लेकिन I'll quote Muhammad Ali here when he says a banker counts the money, he goes to the bank, that's his job. Similarly, my job is to punch people in the face and get punched in the face, right? So that's the one aspect. लेकिन फिर जब हम असल fighter तब कहलाते हैं when we make sure that we know that yes, we fight with every single thing, which means अपने नफ्स के साथ भी लड़ना, अपने गुस्से के साथ भी लड़ना, और जो भी destructive thoughts हमारे दिमाग में आते हैं उसके साथ भी लड़ना. I think fighting as a lifestyle वाली बात है ना कि you have to take that as a lifestyle. You can't just be like अच्छा ये मैं आधे घंटे के लिए जाके ये करूँगा और फिर मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल बस इसी तरह से. Exactly. And लड़ना जो है fight, that is like maybe 10% of it. The fighting aspect, and that is just to sell the sport, right? कि फलाने की fight हो गई, इसकी इससे fight हो गई, ये इतना अच्छा fighter है, वो इतना अच्छा fighter, they're fighting, oh my god, it's such a huge fight. That is just to sell the sport. Other than that, the real deal is that when you work out, when you are training for something, it means you're working hard. It teaches you how to work hard, and that is what teaches you, like bringing us back to the point where it all started. कि troubled kids, or be it anywhere, any kind of kid, जिसको बेशक वो privileged हो, underprivileged हो, troubled हो या troublesome हो, the solution is any sort of physical activity. आजकल के time के हिसाब से I think that mixed martial arts is the thing. This is the activity जिसमें not only your body but you're forced, you're compelled to use your mind as well. आप गुस्से में आके किसी को जोर से मुक्का मारेंगे. For example, you and I, we train together, right? Yeah. And we spar. I punch you in the face, you get angry.
and I have the experience, and I'm just smiling at you, and I see that you're angry. You start swinging at me. You're giving me openings to punch you even more. Yeah. Right? And then you're tiring yourself out because I can see what you're going to do. Right? I can telegraph every single thing. I'm going to make you miss. You're going to get tired, and that's when I'm going to, punch you in the face and be like, haha, told you so. Yeah. So, ये चीज़ सीखने वाली बहुत वो तो ज़रूरी फिजिकल है ना, बट देन अगर मैं 40 साल का एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक कंपटीटर के साथ लड़ रहा हूँ, तो एसेंशियली सेम चीज़ें हो रही होंगी कि मैं जो हमारी आपस में कॉम्पिटिशन्स हैं वो एक मुक्कों की तरह होंगे. मैं जितना पैसा उस पर लगा रहा हूँ वो मैं टायर्ड हो रहा हूँ. तो आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट. वो जो स्ट्रेटजीज आप आज सीख रहे हैं वो आगे जाकर आपको जिंदगी में हर एस्पेक्ट में, बिकॉज़ द वर्ल्ड इज अ ब्रूटल प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. और उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर आपने स्ट्रेटजी वाले एलिमेंट बोला कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है. आप अंधाधुन किसी भी चीज़ में घुस जाएं और आप देखें कि जी आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, एक दफ़ा मिल जाएगा, 2 दफ़ा मिल जाएगा, तीसरी दफ़ा कोई ना कोई ज़्यादा स्मार्ट होगा जो कि आपको बेसिकली तो मनूवर थ्रू कर देगा. और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि फाइट, जो फिजिकल फाइट है उसको ग्लैमराइज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ को मेन स्ट्रीम करते हैं तो उसमें वो जाहिर है कि यू जब तक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं आता तो वो कमर्शलाइज नहीं होती, मैसेज तक नहीं पहुँचती. एंड आई वांट टू ड्राइव द कन्वर्सेशन नाउ टुवर्ड्स द कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ इट. डू यू थिंक पाकिस्तान में इट हैज़ एट द वेरी लीस्ट नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट कि it's a growing interest and a growing industry. But I think it's a far cry from अगर मैं कहूँ कि यार वाकई कुछ हो रहा है, right? Do you think अगले 10-15 साल के अंदर हम देख सकते हैं कि mixed martial arts and इस किस्म की professional athletes and professional fights एक बड़ा real part of our system बन सकती हैं? I think yes, क्योंकि given 15 years जिस रेट से पाकिस्तान में स्पोर्ट ग्रो करता है और फिर वापस जो है ना डिके कर जाता है. मिक्स मार्शल आर्ट्स की जो है ना एक बहुत छोटी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, अभी ग्रो कर रही है, लेकिन एज फाइटर्स एंड जो फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट जो करते हैं, नॉट फॉर द कमर्शियल एस्पेक्ट, उनके लिए इनकी ना बहुत एक छोटी सी कम्युनिटी है जो कि जब उनको कहते हैं यार मुफ्त में लड़ लोगे, वो कहते हैं हम लड़ लेंगे. यार अपना ख़र्चे पे आना होगा, रहना तुमने खुद है, खाना पीना खुद करना है, लड़ोगे, मेडिकल बिल्स अपने तुमने खुद जो है ना पे करने हैं, जो ट्रेनिंग कैंप होगी उसके भी पैसे, सो यू हैव टू पे फॉर एवरी सिंगल थिंग. विल यू कम एंड फाइट? एंड द गाय विल से यस आई विल फाइट. तो ये बहुत ही छोटी सी ना डाई हार्ड कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी की वजह से आई थिंक कि वी डेफिनेटली यस 15 ईयर्स में वी हो सकता है. आई एम होपफुल बिकॉज रिसेंटली पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड हुआ, PSL हुआ, उन दोनों के अंदर जो है ना मिक्स मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स को रिकग्नाइज़ किया गया. जो स्पेशली PSL ने जो है ना पहले भी रिकग्नाइज़ किया. अहमद मुश्तबा को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है ना अपना एम्बेसडर रखा. उसके बाद अनीता करीम हुज पाकिस्तान फर्स्ट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, फीमेल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, हुज माई सिस्टर एज वेल. तो अच्छा पूरा खानदान यार कमाल. मोनोपोलाइजेशन का नेक्स्ट लेवल चेक करें कि जी अब चलता फिरता अब अगली जनरेशन आ जाएगी, ये मेरा भांजा भतीजा. भाई सियासतदान के हम क्यों ना करें. नहीं दैट्स प्रीटी इंस्पिरेशनल, जबरदस्त. तो उसको जब रिकग्नाइज किया तो आई वाज लाइक ठीक है, बेशक इट्स लाइक प्लेइंग द पाकिस्तान में प्लेइंग द गर्ल कार्ड वाला सीन हो गया. यस वी डिड प्ले द गर्ल कार्ड देयर, बट एटलीस्ट इट पेड. पाकिस्तानी एथलीट्स को आज तक किसी ने इस तरह स्पॉन्सर नहीं किया जिस तरह अभी किया जा रहा है. राइट, ठीक है. स्पेशली अगर कॉम्बैट्स एथलीट्स की बात करें, पाकिस्तान में बॉक्सिंग का उस्मान वजीर जो है he started his journey from Team Fight Fortress as well. He's a really dear friend of ours and he's a really great teammate of ours. जब भी उससे बात होती है वो कहता है उस्ताद सही बताऊं तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी भी मिक्स मार्शल आर्ट्स में उतना पैसा नहीं है. इट्स लाइक यू गाइज जितना मिक्स मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स मेहनत करते हैं, जितना आप लोग मार खाते हो, यू डिजर्व मोर मनी, बट देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट. क्योंकि obviously not everybody likes that blood sport, right? Boxing को एक gentleman sport समझा जाता है, even though boxing has more deaths than mixed martial art. ठीक है. Right. So because of that, because of all of this, पाकिस्तान में recognition अभी बहुत अच्छी तरीके से मिलना शुरू हो गई है. स्पोर्ट्स अवार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट स्पोर्ट्स was one of the best sportsmen of the year. Along with a lot of other guys. बॉक्सिंग का मोहम्मद वसीम था, क्रिकेटर्स थे, क्रिकेटर्स के अलावा अभी और स्पोर्ट्स को भी जो है ना रिकग्नाइज करना शुरू हो गए. सो
अभी एक ट्रेंड शुरू होगा, उस तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, शाउट आउट टू दिस फैमिली के तीनों भाइयों ने बैठ कर, लाइक दिस इज ट्रू एम्पावरमेंट का जैसे कहते हैं ना, कि वो है कि तीनों भाइयों ने अपनी बहन को जाके एक वायलेंट स्पोर्ट्स की तरफ धकेला और धकेल कर उन्होंने कहा बेसिकली सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस फॉर दैट। उसने खुद ही चूज़ किया। सो वो हुंजा से आई इस्लामाबाद पढ़ने के लिए, और हम वी हैड लाइक, और let me like make this clear कि अनीता से पहले there were 3 girls who came to us to become professional fighters. Right. The 2 of them they stayed at our house. मतलब accommodation, खाना पीना सब कुछ हमारी तरफ से था, ट्रेनिंग फ्री, ट्रेनिंग गियर हम जो है ना टीम फाइट फोर्स ने उनको दिया, they couldn't take it. Right. They were like हमसे नहीं होगा, उन दोनों जो है ना ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट्स थे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, and then they left. They got भाई like वही एक जो पाकिस्तानी टिपिकल चीज़ में होती है, शादी कर लो घर बसा लो, right? So when Anita came here, हमने कोई उसको फोर्स नहीं किया, उसका एडमिशन हुआ, लाइक स्टडी, और साथ साथ जो है ना ऑब्वियसली शहर है तो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, तो फिटनेस वगैरह के लिए भी और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आज सीख लो। एंड 1 month of training and she's like, I don't want to study, I want to fight. And I was like, are you serious, you want to fight? मार पड़ती है, कहती है हाँ मैं फाइट करूंगी। हमने कहा ठीक है, let's see, उसका शौक है। तो हमने, क्योंकि हमारे पास कोई लड़की थी नहीं ट्रेनिंग करवाने के लिए या उसकी ट्रेनिंग पार्टनर, तो हमने कहा ठीक है लड़कों के साथ सुबह जो प्रोफेशनल की ट्रेनिंग होती है उसमें आ जाओ। अगली सुबह सामान पकड़ के पहुंच गई। हमने कहा वेरी गुड, ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग हो गई, पहले दिन स्पारिंग थी, मार खाई उसने, वापस घर आई, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ओके, अगले दिन गए, रेसलिंग था, पकड़ पकड़ कोई इधर फेंक रहा है कोई उधर फेंक रहा है, बिकॉज द गाइज दे डोंट केयर इफ यू आर अ गर्ल, इफ यू आर अ गाय। लोग कुछ बोलते नहीं, हमने सिर्फ लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करना है, ये करना है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स, बट वंस यू गेट इन दिस स्पोर्ट यू फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज आपको अपने जान के लाले पड़े होते हैं कि अगले ने मुक्का मार के मुझे सुला दिया तो मेरे करियर खत्म हो जाएगा। तो आप ये नहीं देखते कि लड़की आई है या लड़का आया है या कौन है। सो शी गॉट रैगडॉल्ड। उसने कहा मुझे फिर मज़ा आया। फिर उससे अगले दिन जिजित्सु था, multiple submission locks on her arm, on her neck. She's like, I loved it. And then she kept showing up every single day. She was bruised, she was hurt, she was sore, but she kept showing up every single day. And that's when the coaches were like, that's the dedication, she's got it. Yeah. She doesn't complain about it. घर आती है, घर के काम भी करती है, अपनी पढ़ाई भी करती है, साथ में 2 time training भी करती है. She has the discipline, you know, she has the work, she has a very strong work ethic. So let's see. And then ultimately, एक मुश्किल से 1 साल की training थी उसकी, and she fought, her first ever fight was in mixed martial art was against a professional kickboxing champion, and she already had a lot of fights. And without any experience in fighting, she shocked the world. Second round में she lost the fight, she lost her first fight, but उसकी opponent ने खुद आके बोला, she's like, are you sure you've never fought in your life before? She's like, no, I have not. She's like, my God, you fight like a warrior for someone who hasn't fought. And then second fight, she fought like a, I think 7-8 inches taller opponent. She beat the living daylights out of her. Uske baad third fight abhi recently, I was in the corner. Again, the girl was tall because Anita is short, right? So skinny और जो है ना लंबी लड़कियाँ उसकी डिवीजन में आती हैं, and she did not let the height and reach advantage play any role for them. So she beat that opponent as well. How old is she? She is 24. What an inspiration. I'd love to talk to her one day as well. But चलें कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा वापस लेकर आता हूँ इंडस्ट्री मोनेटाइजेशन की तरफ, राइट? आपने ये बात बोली कि, और ये चीज़ Arsalan Ash was here a few days ago and he was talking about esports and Tekken and all of those जो पूरी बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है. And after the conversation I was just thinking कि पाकिस्तान में generally a lot of times what we do is we try to ask for government support. Right? चाहे वो आए in terms of acknowledgement, चाहे वो आए in terms of money, sponsorship वगैरह वगैरह. I do agree. There is a requirement for that as well, but it's not the only variable or requirement. Exactly. Right? What you guys, again, what Arsalan proved, what you guys proved is कि irrespective of whether acknowledgement हो या ना हो, आपने अगर करना है तो आप कर सकते हैं. Exactly. And then उसी के साथ साथ जब आप एक दफ़ा seed sow कर देते हैं तो automatically वो acknowledgement भी आ जाती है, जैसा कि आपने बताया. But I think जो ज़्यादा है उसमें चीज़ मुझे समझ नहीं आती, वो ये नहीं आती कि हमारा private sector जब आता है और वो आके इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो somehow we don't know the equation. गोरे को बड़ा अच्छा पता है, गोरे को तो पता है, इंडियंस को बड़ा अच्छा पता लग गया कि उन्होंने अब कबड्डी को भी सेक्सी कर दिया, उन्होंने हर चीज को सेक्सी करना शुरू कर दिया, राइट? एंड आईपीएल वाज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट स्टार्टेड इट ऑफ. व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट इज कि एक बेसिक चीज होती है कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर, या तो आप ये करें कि आप लोगों को ब्रांड नेम बना दें. सो मैं कहता हूँ यार उलूमी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाए,
और एक थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाए, वो आपस में लड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाई वुड आई नॉट केयर, एग्जैक्टली राइट? एंड दैट्स समथिंग दैट वी सी ऑलरेडी हैपनिंग के फाइट्स, ग्लोबल फाइट्स होती हैं, मुझ जैसे बंदे जो हैं वो देख रहे होते हैं बॉक्सिंग की फाइट्स, बिकॉज स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी हुई हुई होती है कि पीछे ये बंदा और वो बंदा, यार चलो देख लेते हैं, वो आई थिंक वाज खुबैब और खबीब एंड कॉनर मैकग्रेगर, या एब्सोल्युटली। तो एक मुस्लिम वर्सेस वो वाली हो गई, कोई ना कोई एलिमेंट था जिस एलिमेंट ने आपको इंटरेस्ट गेज किया आपका, यस, एंड बिकॉज दैट इंटरेस्ट इज नाउ गेज्ड, मसला हमारा ये है, हम बड़े कम्युनिस्टिक सोच रखते हैं कि गवर्नमेंट आके स्पॉन्सर कर दे, पैसा थ्रो कर दे, फॉर द सेक ऑफ रिटर्न उसको क्या मिल रहा है कि ग्लोरी मिल रही है। अच्छा, ग्लोरी इज नॉट सस्टेनेबल, इट्स नॉट ट्रू, राइट? सो अगर मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल, एंड नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन, आपने कहा मिक्स मार्शल आर्ट्स की एक बहुत पर्टिकुलर कम्युनिटी है, राइट? कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में होगी, और उसमें वाई डोंट वी हैव लेट्स से इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर फाइट्स और लाहौर वर्सेस कराची फाइट्स, वेल पब्लिसाइज्ड फाइट्स, लाइक हमारी तो सुबह शाम हो रही होती है ना। अभी PSL का गाना आया तो कराची वाले आ गए, उन्होंने कहा जी पंजाबी जो है, एंड कंसिडरिंग अ कंट्री विच इज़ लिटरली एन एथनिक सेक्टेरियन हॉट बेड, I mean, you see where I'm going? I understand 100%. This is the perfect product. I know. You bring these people in, ठीक है भैया, आके वो धरने देने के बजाय आओ और आके लड़ो, अपने सेक्ट को रिप्रेजेंट करो, अपनी एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करो, अपने शहर को रिप्रेजेंट करो, एंड अपनी पूरी की पूरी जनता को लेकर आओ। और जब आप लड़ रहे होगे तो हम पॉपकॉर्न भी बेचेंगे, हम शर्टें भी बेचेंगे, हम सब बेचेंगे, एंड द मनी इज राइट देयर। So probably to start off that this conversation, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा जो कम्युनिटी है, is that a diverse community across different cities in Pakistan? It is. The deal is, ये जो अभी आपने बोला सिटीज़ वाली जो बात की, ये करने की कोशिश की गई थी 2017 में। फाइटिंग अलायंस नाम का एक पाकिस्तान का 2013-14 में जो बना था, 13 में बना था, एंड ऑफ 13 में। The aim of fighting alliance was that it was made by the fighters for the fighters. Right. So फर्स्ट एवर इवेंट में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हुआ। अफगानिस्तान के 8 फाइटर्स आए, पाकिस्तान के 8 फाइटर्स आए, आपस में फाइट्स हुई। नाउ वो ट्रेडिशन, वो कॉन्सेप्ट अभी तक फॉलो हो रहा है, राइट? सिटीज़ का अब 2017 मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि उसमें क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व थे। देयर वाज, आई थिंक देयर वाज इंजमामुल हक, देयर वाज मुश्ताक अहमद, एंड दिस really tall guy बॉलर जो है, I know Irfan something. Yeah, absolutely. So these 3 guys, अब इनको जो है ना, इनको यूज़ किया था कि हम थोड़ा इसको जो है ना मार्केट कर सकें। टीम इंजी, टीम मुश्ताक, टीम मुशी एंड टीम इरफान लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर पेशावर टीम इस्लामाबाद, बहुत करने की कोशिश की। द प्रॉब्लम वाज कि लाइक वेन्यूज़ नहीं मिले। नंबर 1, वेन्यूज़ की जब बात होती थी तो दे वुड आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एंड व्हेन यू से वेन्यू, किस तरह का वेन्यू? वेन्यू बेसिकली ये होता है कि रिंग आप खुद बनाते हैं, पर्पस बिल्ड? वी हैव अ केज। ओके, ठीक है, केज हमारे पास होता है। वी जस्ट नीड अ स्पेस, जिसमें प्लेस जहाँ पे इतनी स्पेस हो कि बहुत ज़्यादा नहीं तो एट मैक्स 1000 लोगों की कैपेसिटी हो। ठीक है, बिकॉज वी नो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना शो अप एंड वॉच 2 guys फाइट। राइट। ये चीज़ जो हमारी पठान बरादरी में उनमें बहुत ज़्यादा है कि वो इस तरह के स्पोर्ट को देखने में जो है ना बहुत शौक रखते हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान के भी बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। इसीलिए व्हेनेवर आई फाइट, मतलब मुझे आज तक जो सपोर्ट है, आई थिंक द की टू माई सक्सेस इज दैट गिलगित बल्तिस्तान वाले मेरी एक ट्रेनिंग की भी वीडियो उसको भी वायरल कर देते हैं। इट गोज लाइक thousands and hundreds of thousands of shares. सेम इज द केस विद आवर पठान ब्रदर्स। उनका एक फाइटर होगा, वो जितने मर्जी पेज हैं, वो पाकिस्तान के दुनिया के जिस मर्जी कोने में है, दे विल शेयर द लिविंग डेलाइट्स आउट ऑफ इट, एंड दे विल मेक श्योर दैट एवरीबडी नोज कि ये है। आई रिमेंबर जब 2016 में आई वॉन फ्रॉम अ फिलिपिनो अपोनेंट, एंड उसको मैंने आई वॉन आई बिकेम द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन एन इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स बेल्ट। तो उस टाइम पे ये बादशाह खान यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट हुआ था, एंड आई डेडिकेटेड दैट फाइट टू दोज पीपल। एंड उस स्पीच की और उस फाइट की वीडियो, it crossed I think millions of views. अच्छा। And so many people were messaging me, you're our hero, you're inspiration, आप गिलगित के, लेकिन आपने जो ना पठानों का दिल जीत लिया है। किसी ने बोला कि ये बलूचिस्तान से है, किसी ने बोला ये सराइकी स्पीकिंग है। So everyone was like, this guy is, he's us. Yeah, he is us. Yeah. So कुछ और चीज़ बेशक यूनाइट करे ना करे लोगों को, ये जो
I would like, I might sound a little biased, लेकिन लड़ाई वाला जो फैक्टर है, ये जो पहाड़ी एरिया वाले लोग होते हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत जोश होता है लड़ने का, because of the rough terrain and the I understand, because of the survival nature of instinct है ना, exactly, survival instinct है. यहाँ पर exactly. जो प्लेन्स में रहते हैं उनके पास दरिया भी था, उनके पास खेत भी थे, तो उनके लिए exactly, survive करना everything was आसान था. easy. तो फिर खैर अब जब ये लोग हैं ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. इसीलिए जब 2019 में हमारा एक इवेंट हुआ सिराई फाइट नाइट के नाम से, वाज अ ह्यूज इवेंट. पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जावेद अफरीदी, yes, he was like, I'll put money in this. right, So that was one of the biggest shows in Pakistan ever. Fighters को जो ड्यू रिस्पेक्ट और जितने पैसे मिलने चाहिए थे वो मिला. I think the least one fighter got paid was 45 to 50,000 rupees. क्योंकि ऑब्वियसली आप अपना ट्रेनिंग कैंप करके आते हो, और जो लोग पाकिस्तान में ऐसे भी फाइटर्स हैं कि जो who day job is to wait tables, और वो मतलब I've seen their houses, it does not look like a house. जब उनके घर गया तो मेरे like I couldn't hold back and I just had tears rolling down my eyes के दीवार पे वो प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं, बस ब्रिक्स रख के हल्का फुल्का मसाला करके हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कुछ डाल के बराबर किया हुआ है, शेड में भी प्लास्टिक लगाया हुआ है ऊपर के, बस वो धूप बच जाए उसके ऊपर, तो तलपार डाला हुआ है, इस तरह की चीज़. एंड दे आर ट्राइंग टू फीड देयर फैमिली. और वो बंदे 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, उनकी डाइट का कोई नहीं पता, उनकी जो है ना हेल्थ का कोई नहीं पता कि इनको कल को खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए, तो दे हैव टू थिंक अबाउट इट. मतलब दे पुट देयर फैमिलीज बिफोर देयर ओन हेल्थ. तो उस चीज़ में मतलब उनको 45-50,000 फॉर अ फाइट, दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर देम एंड एवरीवन वाज हैप्पी फॉर दैट. लेकिन उसके बाद वो भी डिसकंटिन्यू हो गया. Like we haven't heard from those people again because a lot of money was invested there. सबसे जो अब इस सब को मैं इस तरह करूँगा कि जो we do invest a lot of money, करते हैं इवेंट्स, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें फाइटर्स को और या तो जो स्पोर्ट है उसको रिस्पेक्ट देने की बजाय हम लोग मिनिस्टर्स को लेके आते हैं, किसी VIP बिग शॉट को लेके आते हैं, कैमराज सारे उनकी तरफ होते हैं, ध्यान सारा उनकी तरफ होता है. अंदर जो है ना आई रिमेंबर के देयर वाज वन शो जहाँ पे इवन इंडिया का एक शो था, जब उन्होंने नया मिक्स मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया था, वहाँ पे वो दिखा रहे हैं बाहर सुष्मिता सेन और पता नहीं कौन बैठे हुए हैं, अंदर फाइट चल रही है, बाहर कैमरा ऐसे गोल मटोल ऐसा करते हुए जो ना एक्ट्रेसेस की शक्लों को दिखा रहे हैं और जो एक्टर्स की शक्लें दिखा रहे हैं और उनके जो ना मिनिस्टर्स जो बैठे हैं उनकी शक्लें दिखा रहे हैं. And I mean that's humiliating, right? Like at the end of the day there are people who spend the good part of their life. Exactly, and that is what people like normal जो laymen जो है, they don't who want to watch the fights, they don't want to see all of this. Right, so it boils down to that. And then yes, government की support की ज़रूरत नहीं है. I mean private sectors ने भी अपनी branding करनी होती है, but then again we need to learn how to sell the sport to them. Right. Cricket was not so sellable, लेकिन 92 वर्ल्ड कप ने ऐसा वो धमाका कर दिया कि अब हर कोई क्रिकेट कर रहा है, हॉकी भूल गए हैं. अपने नेशनल स्पोर्ट, like where is hockey? Yeah, nobody even cares to criticize it anymore. कि यार आपकी परफॉर्मेंस पूरा है, वो खैर है यार, हॉकी है. Exactly. What's the average ticket size for an average fight? What's the cost? I'm trying to understand. I'm an influencer. I'm a content creator. To watch an MMA event? No. To hold an MMA event in Pakistan. Again, like I said, if you have a ring, you can borrow a ring from someone. Let's say you have a ring. Let's say I have a ring. Let's say I have a place and आपने वो पूरा का पूरा sort down करके आपने लोगों को पे भी करना है, सारा कुछ comfortable करके. What's the average cost of कि एक मेरा event के ऊपर इतना पैसा निकल जाएगा? Everything depends on the quality of event that you want to give. ठीक है. Right? आपके पास आप चाहते हैं कि मैं इसको Facebook के ऊपर जो ना अपने पेज के ऊपर मैं I'll go live. You can use your phone or you can use a broadcast. ठीक है. उसके अलावा फिर आप मैं वेरिएबल बिल्ड करता हूँ. मैं कहता हूँ कोई बंदा नहीं है, कोविड का टाइम है, ठीक है, एक रिंग है और टॉप ऑफ द लाइन ब्रॉडकास्ट है, ठीक है. उसके लिए आपको लोकेशन चाहिए, उसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट वाले लोग चाहिए, और उसके लिए आपको दोनों टीम्स चाहिए मैनेजमेंट की, और आपको एक किक एस कमेंटेटर चाहिए. Probably the biggest thing missing in Pakistan is a kick-ass commentator. वो भी अभी आना शुरू हो गया. शुक्र है, there is this one two guys. Absolutely, yes, I've seen them as well. तो वो finally वो भी build होना शुरू हो गया. आपने उनको भी hire कर लिया. What's the cost of such an event? Again, everything depends on which fighter is fighting on the card, how many fighters are on the card, and हर fighter को आप कितना pay कर रहे हो. ठीक है. It all depends on that budgeting. At the end of the day, for me, what matters the most is that are you paying the fighter? If yes, how much are you paying him?
सो एक फाइटर है जो आपको पता है कि यार इसने 10 फाइट्स लड़ चुका है, ठीक है, दूसरा फाइटर है आपको पता है कि वो 3 फाइट्स लड़ चुका है लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है अगले से, तो फिर वहां पे आके होता है कि यार दिस गाय हैज मोर फैन फॉलोइंग, पीपल पे हिम मोर, दिस गाय हैज 10 फाइट्स, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बट ही इज नॉट एक्साइटिंग, आता है पकड़ता है खबीब की तरह जो ना रेसल करता है, बस बैठा रहता है, he doesn't do anything, and you know he wins fights, he has 10 wins no loss, but he's not as exciting to watch. So how much would you pay him? How much would you pay the other guy who's an exciting fighter जिसको देखने के लिए लोग कहते हैं यार हम टिकट भी खरीद लेंगे, right? अगर आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर आप पेपर व्यू रखते हो वो भी खरीद लेंगे. So everything then boils down to that. आपकी प्रोडक्शन के अलावा आपका सारा खर्चा आता है कि आपने 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके फाइटर्स के लिए जो फर्स्ट एड का बंदोबस्त किया हुआ है दैट, एंड सेकेंडली अगर आपके फाइटर्स कहीं और से आ रहे हैं तो आर यू पेइंग देम वेल, राइट? एंड अगेन गिवन आर यू गिविंग देम अकोमोडेशन, या आप जो पे कर रहे हो उसी में उनका अकोमोडेशन और ट्रैवल कॉस्ट कवर हो रहा है. सो इट ऑल जस्ट बॉइल्स डाउन टू दैट. चलिए, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मुझे एक नंबर मिल जाए. कोई एक नंबर, इट्स 1 रियली million, डिफिकल्ट. 2 million, 3 million. 1 million is a decent number. 1 million पे start 1 million is a very decent number if you want to have a good decent show, right? With decent fighters. Given कि आप जो है उनको good first aid, good doctors, जो कि ये नहीं है कि डॉक्टर तो गप्पे लगा रहे हैं, हाँ यार खैर हम बस बुला लिया तो हम आ गए. No, you have ambulances ready because again मार खानी है, किसी की लात लग गई, वो एक ही दफा ही होगा और जब वो होगा तो किसी की जान जाएगी, तो you have to be very very vigilant. And I think the reason why I asked this is because on an average वो बंदा जो YouTube के ऊपर 5-8 लाख व्यूज लेता है ना, वो 6 से 8 लाख रुपया डिमांड कर रहा है ब्रांड से. इंस्टाग्राम के ऊपर जो बंदा जो है वो 1-1.5 लाख फॉलोअर्स रखता है, वो एक एवरेज पोस्ट का 50-60 हज़ार रुपया डिमांड कर रहा है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मिक्स के अंदर, मिक्स है ना, एक बेसिक बिजनेस है, व्हाट्स मिसिंग? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता डिजिटल के ज़माने में आपको सीटें भरने की ज़रूरत है. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट दिस व्हाट आई थिंक कि जहाँ तक मुझे समझ आती है कि हमारी जो लोगों की मेंटालिटी है, आप एक फुटबॉलर को, लेट्स सपोज मिक्स मार्शल आर्ट तो चलो साइड पे करो, आप एक फुटबॉलर को you'll show that okay this guy's a footballer, he's an athlete and this and that. No one's interested in that, right? No one is interested in that. I hate myself for saying this, लेकिन TikTok के ऊपर एक बंदा चश्मे उतारते हुए स्लो मो में जो है ना पीछे शेर के दहाड़ने की आवाज में चलता हुआ रहा है, he's going to have millions of views. वो अभी पिछले दिनों वो this YouTuber very famous, वो 2 भाई हैं who challenged Tom Cruise and said, you know, I want to fight you, and it was like headlined all over the world कि जी oh my god ये YouTuber जो है ना वो Tom Cruise legend है, उसको कैसे fight के लिए कर रहा है. Again that news वहाँ से बनती है. Exactly. And I think there a little bit of engineering could really sort of kickstart something like this, and I hope it does, to be very honest. I think let's have a conversation after the cameras close as well, but I'm going it's 52 minutes mark, घंटे तक मैं कोशिश करता हूँ. थोड़ा सा मैं conversation करना चाह रहा हूँ हुंजा के बारे में. It's a beautiful place. It's probably जिसे कहते हैं ना कि crown jewel of this country. You got मैं recently गया था, so I went in 2015 I think, and then I went for my honeymoon in 2017 if I remember correctly. एंड जो करीमाबाद था वो मरी दिखना शुरू हो गया था. राइट. So how do you feel about now Hunza or the northern areas, particularly the Hunza area, getting this much attention, and the way that attention is now converting into actionable economic opportunities, or on the other hand this mushroom growth that is destroying the culture, the nature, the things that you hold very very dear, जो कि जिसे कहते हैं ना कि sacred है for the people who've lived there for hundreds of years. How do you feel about that? Again, I'm not trying to push you towards कि यार आप मुझे नेगेटिव बताएं, पॉजिटिव बताएं. मैं sort of अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पर, बिकॉज मैं तो ऐसा सियाहत के लिए जाऊँगा, जाकर घुमा कर आ जाऊँगा, 4 कमेंट्स कर दूंगा कि यार डीजल की स्मेल आ रही थी, पहले नहीं आती थी. Honestly, I mean, I don't know if you can. I'm actually glad that you referred to Hunza as looking like muddy. क्योंकि I remember 2016 में when I went, I won a fight in July, और August में my dad was like यार चलते हैं ना, गांव चलते हैं. तो I went to Hunza, तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी Hunza वालों ने कहा उलूमी इंडिया से जीत के आया है, तो बहुत, because my mother is from करीमाबाद, तो करीमाबाद में एक बहुत ही जो है ना ग्रैंड इवेंट जो है ना it was hosted. DC Hunza आए हुए थे, AC Hunza, हर कोई जो है ना बड़ा going crazy, and
that is when I saw, I actually like witnessed the first time ever कि यार हुंजा को हो क्या गया है. And I was really surprised because मेरा पूरा बचपन मतलब I think 10-12 साल तक 13-14 साल तक का जब मैं था, my vacations was all हुंजा शिमशाल. तो वहाँ पे जब 2016 में when I went and I saw the situation, I actually discussed it with the DC of Hunza as well. So he said कि we cannot like pinpoint onto one thing, you know. Personally मुझे बहुत like I mean you grow up in a place जहाँ पे आपको यार it's peaceful. And all of a sudden you walk, आपको पता है यार 8 बजे, I still remember 9 बजे रात को जो है ना, रात के 9 बजे वहाँ पे बुरुशस्की में खबरें जो है ना रेडियो पे नशर होती थी. और everyone would, हर घर की यही स्टोरी थी कि बिस्तर में लेटे हुए सोते सोते जो है ना वो बुरुशस्की न्यूज़ सुनते थे और शो सुनते सुनते सो जाते थे हम लोग. और 11:30 बज रहे हैं, हसल बसल कोई सीन ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो है ना वाकई में मरी मैं आ गया हूँ या तो इस्लामाबाद की किसी सड़क पे मैं फेर रहा हूँ. एंड इट फेल्ट रियली वियर्ड. मुझे बहुत अजीब सी वाइब्स आई एंड वेरी अननेचुरल. और हम लोग लाइक यू सेड कि जो है ना जो वहाँ पे इतने सालों से रहते हुए हैं उनके लिए जो है ना ये चीज़ बहुत ही ऑड है, बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग है. और अभी भी मतलब मैं जब भी किसी भी बुजुर्ग से मिलता हूँ वो कहते हैं हमारा कल्चर ख़त्म हो गया, हमारा ये हो गया वो हो गया. I just want one thing from those people. I mean, whenever I've traveled to Thailand, I've seen one thing कि लोग वहाँ पे थाईलैंड में टूरिज्म भी है लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व भी किया है. यहाँ पे हम लोग टूरिज्म के पीछे नेचर और कल्चर को दोनों completely तबाह कर देते हैं. I think the reason why I use the word mushroom growth, कि आपने सस्टेनेबल ग्रोथ का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, राइट. अब आप आइसोर नहीं बना सकते. आप अब वो करीमाबाद की आप गली में जाते हैं तो वो एक बिल्डिंग ओवर बिल्डिंग आपकी पहाड़ी का व्यू ही खत्म हो गया. तो व्हाट्स द फ्रिकिंग पॉइंट? एग्जैक्टली. एंड सेकेंडली मतलब पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसे ग्रीन पहाड़ है नहीं कि आप बोलो कि यार ग्रीन पहाड़ देखने जा रहा हूँ. जो वहाँ की द ब्यूटी इज द विलेज इटसेल्फ. ठीक है कि बड़े बड़े जो ना बंजर पहाड़ों में आइस स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच में छोटी सी जो ना आपको ग्रीनरी नजर आती है व्हिच लुक्स ब्यूटीफुल. एब्सोल्युटली. एंड उसी ग्रीनरी को आप काट के बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा रहे हो तो इट्स लाइक काउंटर प्रोडक्टिव. एग्जैक्टली कि मतलब ठीक है आप बिजनेस कर रहे हो फाइन, लेकिन आप जब आपके पास वो ब्यूटी रहेगी नहीं तो आप किस चीज़ के नाम बिजनेस करोगे. तो इस चीज़ को जो है ना समझने के लिए अगेन फिर यू कैन नॉट पॉइंट यू नो योर फिंगर एट वन थिंग. तो एक चीज़ को आप पिन पॉइंट करें तो और उसके पीछे 3-4 और फैक्टर्स निकल आते हैं. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है. सो यू नो इट जस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. फिर आप वही है ना, हर बंदा आपको एक रीजन देता है एंड एवरीबॉडी जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ इग्नोर्स इट एंड इट बिकम्स अ ह्यूज टेरिबल नाइटमेयर अनफॉर्चुनेटली. चलें उलूमी, वन लास्ट क्वेश्चन. डू यू हैव एनी अपकमिंग फाइट्स? कोई प्लान है कि यार आगे लड़ना वड़ना है? क्या सीन है? पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे और पूरी ज़िंदगी लड़ना है इंशाल्लाह. I do have a fight coming up inshallah. Not allowed to disclose any details about it, but it's going to be exciting one. A very exciting fight. It's going to be a big fight. I'm fighting after, like I said, after 2.5 years. So ek hai कि, you know, gotta get back to the win column, and inshallah when I win this fight, it will be a win after 4.5, almost 5 years. So really stoked. I got a call for this fight a couple of days ago और उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है कि short notice है आपके लिए, 3 weeks notice है, लेकिन would you take the fight? And I was like, I am going to do anything it takes to take this fight and to win this fight. So I am super stoked. चलें Uloomi, thank you so much for coming in. Lots and lots of good luck for this fight. I know short notice है तो आपको 24 hours training चल रही होगी. Oh yes. But you know the entire country is standing behind you and I hope you know you win this for us. Thank you so much for coming in. Super insightful. मैं honestly मैं घंटा और जा सकता हूँ. Inshallah after this fight we're gonna have another conversation because there's so much more to explore. Thank you so much for having me over, brother. Thank you so much. Appreciate that. Absolutely. See you soon inshallah. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये पसंद आई, अगर आपका कोई दोस्त है जिसका वायलेंट स्ट्रीक है और वो मुक्के मारता रहता है आपको, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा. मे बी वो भी MMA जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है. इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुनने वाले सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली एपिसोड्स का उनको नोटिफिकेशन मिलेगा. यूट्यूब वाले सामईन अगर लाइक का बटन दबाएं तो इंगेजमेंट बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी. इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली एपिसोड्स का नोटिफिकेशन ही मिलेगा. Anyways, this was Muzamil Hasan Zaidi. You are watching Third Band Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.